The Lessons from Nature by Linda Morrow. I watched the waves crashing, breaking on the shore, all their anger dispensed on the ocean's floor. I look up at the sky, slow blue, sun shining so bright, spreading heat and happiness with its blinding light. Long blades of grass swaying in the gentle breeze, dancing in a rhythm with so much ease. Look up at the trees, hearing the singing of birds, happily chirping, singing at ease without words. Sitting here, holding my knees to my chest, watching and hearing nature at its best. I pondered how nature could get it so right when we have let nature's lessons get so out of sight. We hold our anger, let our happiness slip away, making us survivors or struggle each and every day. We have forgotten the little things that mean so much, like the laughter, the freedom, and someone's loving touch. If only I could make people stop, watch, and listen to the nature's tale, we could all sit back happily, and the world would not be so frail. In each other's existence, in harmony, we could all survive. I am sure, like the sun, the wind, the trees, the birds, our lives we could revive if only we let nature take its course each day and night. As I sit back and ponder how nature could get it so right, how nature could get it so right, and we lost all the sight. Thank you and have a nice day. जिसका शीर्षक है पेड़ों का जीवन। बहुत खुश था मैं अपने जीवन में, फिर एक दिन इंसान आया। इंसान के आते ही मेरा मन बहुत घबराया। इंसान के हाथ में कुल्हाड़ी देख मुझे मेरा अंत का समय नजर आया। मैं इंसान के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर इंसान ने मुझे काट गिराया। भागना चाहता था मैं, पर पैर नहीं थे मेरे पास। उड़ना चाहता था मैं, पर पंख नहीं थे मेरे पास। किसने हक दिया तुझे इंसान कि तू हमें काट गिराएगा? अगर तू ही हमारा दुश्मन बन जाएगा तो हमें कौन बचाएगा? धन्यवाद। I am going to recite a poem in Hindi. आओ मिलकर पेड़ लगाएं, वातावरण को खुशहाल बनाएं। पेड़ों से मिलती ऑक्सीजन है, पेड़ है तो जीवन है। पेड़ों से मिलती छाया है, पेड़ों से निरोशी काया है। अगर हम न पेड़ लगाएं तो कल फिर कहाँ से पाएंगे? हम सबने पेड़ लगाना है, वन महोत्सव मनाना है। थैंक यू। कक्षा 5वीं बी की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है एक पेड़ की दास्तां। पेड़ हमारे प्रकृति के प्राण हैं, इन्हें काटकर ना करो निष्प्राण। पेड़ हमारे प्रकृति के प्राण हैं, इन्हें काटकर ना करो निष्प्राण। मैं खुश था अपने जीवन में, मैं बहुत खुश था अपने जीवन में। फिर एक दिन इंसान आया, इंसान को अपनी ओर आते देख मैं बहुत घबराया। इंसान को अपनी ओर आते देख मैं बहुत घबराया। इंसान के हाथ में कुल्हाड़ी देख मैंने अपना अंतिम समय नजर लिया। इंसान को हाथ में कुल्हाड़ी देख मुझे अपना अंतिम समय नजर आया। मैं इंसान के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर इंसान ने मुझे काट गिराया। मैं भागना चाहता था, पर पैर नहीं थे मेरे पास। मैं उड़ना चाहता था, पर पंख नहीं थे मेरे साथ। किसने दिया तुझे हक ए इंसान, जो तू हमें ऐसे मार गिराएगा?
अगर तुम ही बन जाओगे हमारे दुश्मन, अगर तुम ही बन जाओगे हमारे दुश्मन, तो हमें कौन बचाएगा, तो हमें कौन बचाएगा। मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है, आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, अपनी धरती माँ को हरा भरा बनाएं। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, अपनी धरती माँ को हरा भरा बनाएं। मेरी ओर से आप सभी को वन महोत्सव की शुभकामनाएं। धन्यवाद। Inhale. Yes, so we should be very thankful to the trees, those who are exhaling for us so that we can inhale. Let's love the trees with every breath. जो भी सांस हम लेते हैं, for every सांस, for every breath, we should be thankful to the trees. Our country has so many festivals and mythological stories which are related with the trees. One of them is Van Mahotsav. So, Van Mahotsav firstly started in 1950 after the three years of independence. Independence कब मिली थी? 1947 में. After the 3 years in 1950, Van Mahotsav celebration was started, and it was started by K.M. Munshi. Mr. K.M. Munshi, who was the Union Minister for Agriculture at that time. ठीक है? Why the Van Mahotsav was started? Van means jungle, forest. वन का मतलब क्या है? हिंदी वर्ड है वन, it means forest. तो महोत्सव का मतलब क्या है? फेस्टिवल. तो ये कौन सा फेस्टिवल हो गया? फॉरेस्ट का फेस्टिवल, मतलब प्लांटिंग ट्रीज. इट इज अ फेस्टिवल ऑफ प्लांटिंग ट्रीज to make the people aware about the importance of trees and encourage the people to plant more and more trees. This festival was started to celebrate. Okay, so now I would like to ask some questions. You are not supposed to prompt the answers collectively.